Now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is again first online lecture, and let's continue with the offline lecture. So last time we in offline lecture we discussed about the electron transport system. So let's continue with this point. So question, maybe you have to write the give the diagram or representation of electron transport systems or describe the terminal oxidation or oxidative phosphorylation. Or the question may be asked like describe the phase of aerobic respiration where free molecular oxygen is used. So I think notes you have to write. हमने notes complete किए थे, so just revise this point. So in ETS, what is in the ETS? On The transport system. yes, electron transport system, or which also called as terminal oxidation. So where these ETS cycles will be takes place, where the ETS cells will be takes place. Cellular respiration. Yes, but in which part of the cells these ETS cycles will be takes place? It takes place in mitochondria. Yes, in mitochondria. Okay. So in mitochondria, there will be some crystal structure will be there, and on that crystal, the F1 particles are there. So on the in the F1 particle, the ETS cycle will be takes place. So in the electron transport system, mainly two factors are responsible. That is NAD and FAD. So what is full form of NAD? Anybody use answer? What is the full form of NAD? Nitroamine adenine nucleotide. नाइट्रो क्या बताया फिर से रिपीट करो. Nicotinamide Yes, Nicotinamide, nicotinamide. Yes, adenine nicotinamide. dinucleotide. Yes, right. Then what is FAD? What is the full form of FAD? So it is flavonine adenine diphosphate. So these two factors are mostly present in the ATS. Then instead of these cofactors or factors, there are four cytochromes are there. That is cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, and cytochrome A3. So here these four cytochromes are present, or it is a part of the ATS, and these different four cytochromes are also called as four complexes. So in some books you can find the word complexes, and in some places they will be only mention the cytochrome. So दोनों एक ही है. कुछ बुक्स में इसे साइटोक्रोम बोला है, तो कुछ बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस वर्ड यूज किया है. So in this ETS there will be four cytochromes are there: cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, and cytochrome A3. Then in this electron transport system, what is the happening? So in first, क्या होता है during the respiration, NAD get reduced to the NADH2, and then these H2 molecules they will be accepted by FAD to form the FADH2. तो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो NAD से. सो NAD का रिडक्शन होके क्या फॉर्म होता है? NADH2. देन NADH2 का यहाँ पे रिडक्शन होके क्या होता है? उसमें से जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? वहां से रिमूव होते हैं, एंड देन दिस H2 मॉलिक्यूल्स दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द FAD. तो वहाँ पे आपने फिगर बनाई होगी जो भी
H2 मॉलिक्यूल से NADH2 से रिमूव होके FADH2 एक्सेप्ट करता है, फिर सॉरी FAD मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, देन FAD का कन्वर्जन FADH2 में होता है. सो देन FADH2 का क्या हो जाता है, जो FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, देन दे विल बी ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर, और वहां पे जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम और H2 मॉलिक्यूल्स दे विल बी स्प्लिटिंग आउट. स्प्लिटिंग आउट मतलब उसका ब्रेकिंग हो जाता है. वहां पे 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2E माइनस मॉलिक्यूल्स वहां पे तैयार होते हैं. दैट इज splitting of the H2 molecules. Then the next step is these two electrons, they will be accepted by these complexes or cytochromes. So first these two electrons that will be accepted by the cytochrome B. A sequence आपको याद रखना है. So firstly these electrons will be accepted by cytochrome B, then cytochrome C, cytochrome A, and lastly cytochrome A3. So these molecules, they will be circulate these electrons. So here the two electrons from cytochrome A3, then they will be accepted by the molecular oxygen. Lastly जो electrons है वो कौन accept करता है, तो oxygen molecules. And then the half oxygen molecules, they will be unite to with the two hydrogen atoms. So at lastly वहाँ पे क्या form होता है, so water molecule. So lastly आप देख सकते हो वहाँ पे two hydrogen atoms से हमने जो line निकाली है, they will be unite with the half O2 molecules, and lastly they form the H2O molecules. So here in this total whole the electron transport system, there will be transfer of hydrogen and electrons will be takes place. So this whole process, they liberate the energy in the form of ATP molecule. So you just see this image and tell me how many ATP molecules are formed in this ETS cycle. 3. 3, Three, ma'am. right? Okay. So here three boxes हमने बनाए फिगर में. देखो यहाँ पे ADP and inorganic phosphate, they will be combined and they can form the 3 ATP molecules. So entire whole these electron transport system form the 3 ATP molecules or 3 ATP molecules, and they can provide the energy to the cells. So this is about the whole electron transport system, or which is also called as terminal oxidation. So next question is about the enlist electron carries in ETS, and why are the reactions of ETS called terminal oxidation. So यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, और दिस ETS cycle, why this ETS cycle is called as terminal oxidation. तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमें देना है. तो जब आप ETS, इफ यू सी दिस ETS साइकिल, यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का जो भी ट्रांसफर हो रहा है वन फैक्टर से दूसरे फैक्टर से. तो यहाँ पे जो भी कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड है, तो इसमें फर्स्टली दो फैक्टर तो मेन है, दैट इज NAD एंड FAD. वो दो मेन को फैक्टर्स है. तो उसके साथ में हमने देखा कि 4 साइटोक्रोम्स है. कौन कौन से 4 साइटोक्रोम्स हैं, बोलो कौन कौन से 4 साइटोक्रोम्स है. Cytochrome B, cytochrome A, cytochrome C, and cytochrome A3. Okay. So sequentially it is cytochrome B, C, A and A3. So these are the main cofactors in the ETS, or it is the electron carriers in the ETS, that is NAD,
FAD, cytochrome B, C, A, and A3. So these are the components or they are carriers of the ETS. Then next one is about the uh, why this ETS cycle is called as terminal oxidation. So यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल दैट मीन्स एंड, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यहाँ पे एंड हो रहा है, दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो एंड कैसे हो रहा है, तो हमने देखा कि जो जब भी एफ का कन्वर्जन FADH2 में होता है तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते, देन दिस 2 हाइड्रोजन एटम दे विल बी reduced and they form the two H plus molecules and two electron molecules. Then that means they will be reduced for it, and these electron molecules they are enter into the cytochrome molecules, and these hydrogen molecules they combine with the oxygen molecules or half oxygen molecules. And when these hydrogen molecules and half O2 molecules they will be combined and they produce the water molecules. So यहाँ पे there will be ending of the or there will be end of the oxidation process. That's why here this ETS cycle is also called as terminal oxidations. Then the question also asks, give the account of ATP generating steps during ETS. तो ETS में एटीपी जनरेशन स्टेप कौन कौन से हैं, तो फिगर देख के आप बताओ मुझे कहाँ कहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। तो फर्स्टली आप देख सकते हो जहाँ NAD और NADH2 से जब हाइड्रोजन एटम वहां से रिमूव होता है तब वहां पे एक एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होता है। दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल कब तैयार होता है, तो जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तब वहां पे दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होता है। देन लास्ट और थर्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होता है, जब साइटोक्रोम ए से जब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है साइटोक्रोम A3 में जब ट्रांसफर होते तब वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है कि एटीपी जनरेटिंग स्टेप्स इन ETS। सो हियर द फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ पे फॉर्म होता है, तो जब NADH2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे रिड्यूस हो जाते, हाइड्रोजन एटम रिड्यूस मतलब रिलीज हो जाते हैं, एंड दिस H2 molecules they be accepted by FAD, and then this FAD is converted or they can form the FADH2 molecule. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। So during this oxidation reduction, energy is released and it is utilized in synthesis of 1 ATP. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दिस एनर्जी रिलीज दैट दे विल बी यूटिलाइज टू फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। जो भी एनर्जी तैयार हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, तो वो एनर्जी हम जो एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए यहाँ पे यूज करें। देन सेकंड कहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहा है, तो व्हेन द साइटोक्रोम बी they can transfer the two electrons and they can accepted by the cytochrome C। cytochrome B 2 electrons रिलीज कर रहा है और जो cytochrome C है वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। So again here the oxidation reduction process will be takes place, energy will be released, and this energy release or this energy synthesize the 1 ATP molecules। So again here the second ATP molecules will be formed। At last the cytochrome A से जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके साइटोक्रोम A3 में जाते तब वहाँ पे अगेन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है और दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द ATP molecules। So in this ETS total 3 electrons will be
free ATP molecules are produced and they can undergo the oxidation reduction process वहाँ पे हो रही है जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं एनर्जी क्रिएट्स कर रहे हैं और दिस एनर्जी synthesize the molecules. So here whole about the electron transport system. So all of you got this point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So जो नेक्स्ट वाले जो भी नोट्स है वो आपको खुद से ही लिखने हैं